Okay, first of all, good morning to all of you. By the grace of great Bible and great God, let us start the today's session. Our topic of discussion is semiconductor. Semiconductor. As you all know that our syllabus get changed, so I will start from the second unit, second section. I will start from the second section, semiconductor. What do you mean by semiconductor? Semiconductor is half conductor. Semi means half. See, please split. Semiconductor means semi plus conductor. So semi means half conductor. Half conductor. So what is the basic definition of conductor? What is basic definition? Conductor means which conducts electricity and heat. So this is a primary definition. Okay, more advanced. Which contains, conductor is a material which contains free electrons. Which contains free electrons. Because free electrons are responsible for the conductivity. Responsible for the conductivity. If I am talking about in terms of band gap theory, there are two types of bands. One is called valence band, another is called a conduction band. See, this is called a valence band. Valence band. So usually it is denoted by VB. VB means valence band. And there is called a conduction band. This is called a conduction band. This is called a conduction band. Conduction band. Okay. And there is a gap. There is a gap. This is called VB. This is called a CB. And there is a gap. This finite gap is called EG. It's called a EG. And this EG is called a forbidden energy gap. This is called a forbidden energy gap. So either forbidden energy gap. So I will show the electron. I will show the electron in the valence band. Okay. So valence band contains electrons. Valence band contains electrons. Either electron will belong to valence band or they belong to the conduction band. So electrons are not supposed to belong in this forbidden energy gap. Okay. And this band is a continuous. This band is a continuous. हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ बेटा, या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होगा या इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा. गैप बीच वाले गैप पे नहीं, बीच वाले गैप में ईजी गैप में. और वो गैप कैसा है? डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? कंटिन्यूस. वो कैसा है? कंटिन्यूस. So I can say that the electron cannot be in the gap Eg, in the finite energy gap Eg. So either the electron will belong to the valence band or will belong to the. Okay. Now what is the formula of thermal energy? What is the formula of thermal energy? Thermal energy is equal to kT. What is K? K is called a Boltzmann constant. And what's the value? 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. और टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन. तो आप देखो जूल बाय केल्विन इनटू केल्विन, है ना? यही हुआ ना? केल्विन आंसर तो जूल. क्या आया? ओके. And when we are talking about the atomic level, see what are the units of energy? ऐसे units joule, CGS. I will write here. SI joule. CGS. Please keep quiet. थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है. CGS, ergs, ERGS, ergs और कैलोरी. लिखा होता है ना, मैंने इतने कैलोरी खाया, है ना? मैं I will go to the gym and I will burn this calorie. इतना खाया उतना बर्न किया कैलोरी. ओके, कैलोरी. जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं वो हैं, the smallest units are electron volt, EV, electron volt. Okay. And 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay. In electron, in terms of electron, which units I will use? I will use this or this. कौन सा यूज करूँगा मैं? Electron. Why? Because कभी आप सुनियारे के पास गए हो, जो गहने बनाता है, तो क्या बोलते हैं? Goldsmith है ना? Goldsmith. And Goldsmith deals at the micro level. Because 1 tola is equal to 10 grams.
that cost is approximately rupees 50,000. Rupees 50,000. Okay. Can goldsmith deals at the kilogram level? No. Because that will raise its cost very high. Okay. तो वो जो गोल्डस्मिथ है क्या करता है, छोटे लेवल पे डील करता है. क्यों? देखो 10 ग्राम है तो 1 ग्राम कितने का हो गया? 5,000. 1 ग्राम कितना होता है? 1 ग्राम नथिंग. हाँ, उसका भी आधा 0.5 ग्राम है. अगर उसके वर्कर ने गलती, थोड़ी सी भी गलती कर दी, आधा ग्राम तोला, आधा ग्राम सोना है ना, इफ ही हैज वेस्टेड, इट मींस 2,500 रुपीस गेट वेस्ट. इतनी एक्यूरेसी है. इससे भी कम, अगर मान लो इसका भी आधा कर दिया, 0.25 ग्राम उसने वेस्ट कर दिया, तो कितना हो गया? 1250. इससे भी और कर दोगे 6.5 है ना, कितना हो गया? 625. तो यू कैन इमेजिन कि कितना, मतलब ही इज डीलिंग एट द वेरी माइक्रो लेवल, माइनर लेवल. ओके, सो ही विल डील एट द ग्राम्स लेवल. तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आर द वेरी स्मॉल यूनिट्स. Okay, for a small energy we have to use for electron volt, for atomic level we will use the electron volt units. Okay, are you getting the point? And what is the formula of thermal energy? kT. Please say that one voice. What is the formula of thermal energy? kT. Speak loudly. kT. सभी बोलो, आप ही बोलो कुणाल कुमार. थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? kT. ये सबको पता होना चाहिए. ठीक है. तो क्या होता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, व्हाट विल हैपन? kT बढ़ेगा. इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, kT विल इंक्रीज, एंड when kT will increase, what will happen? Electron will jump from valence band to the conduction band. Valence band to the conduction band. And due to that conductivity will be in terms of conductor, this Eg, this energy gap Eg is approximately equal to 0, or it is very, very small, of the order of the few electron volt, or sometimes it is approximately equal to a 0, or sometimes they get overlap also. They get overlap in conductor. तो ये किसका डायग्राम है बेटा? कंडक्टर का है. तो कंडक्टर का डायग्राम ऐसा बनेगा, sometimes it get overlap, sometimes it get overlap. वैलेंस बैंड, इंडक्शन बैंड. तो ये क्या है बेटा? कंडक्टर. ये क्या है? ओके. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंसुलेटर. तो इसकी एग्जांपल क्या है इसकी? कंडक्टर की. कंडक्टर के एग्जांपल कौन कौन से बताइए? मेटल्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, they are the examples of the conductor. Now we will move to the insulator. तो इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर का मतलब होता है कि which does not conduct, it will not conduct electricity, or which does not have a free electrons, or more advanced application, the band gap energy Eg is very, very large. The band gap energy Eg is very, very large, so that the electron will not jump from valence band to the gap. इतना ज़्यादा होता है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जंप मारना है तो आप मार लोगे. अगर आप बोलो यहाँ से लेके क्रास के बाहर तक जंप मारना है, then you are not supposed to do this. So similarly it is for the electron. So electron will not jump from valence band to the conduction band, because this band gap energy is very, very large. Band gap energy is very large. Okay, so approximately it is greater than 3 electron volt. It's greater than 3 electron volt. जिसको क्या बोलते हैं? Insulators. Okay, rubber, plastics, these are the examples of the okay. And which material has the most band gap energy? Can you tell me? वो कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा मटेरियल है जिसका सबसे ज़्यादा बैंड गैप एनर्जी होता है? देखो जरा गूगल पे चेक करो, चेक करके मेरे को बताओ. नो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होता है? सी चेक कीजिए, पता होना चाहिए आपको. 6 के आसपास होता है उसका. मैं आपको बताता हूँ.
नहीं होता है, बट मोस्ट किसका होता है सबसे ज्यादा? देखिए वंशिका, डू इट फास्ट। जोसेफ, शाहिद इमाम, किसका? किसका? 2 पॉइंट। डायमंड का चेक कीजिए कितना, डायमंड का कितना होता है चेक कीजिए, कितना होता है डायमंड का कितना होता है? मैं सीरियस कह रहा हूँ बेटा, ये चेक कीजिए डायमंड बैंड गैप एनर्जी कितना होता है? 5.5 होता है ना, तो मैंने कहा था अप्रॉक्सीमेटली 6। तो डायमंड इसकी फाइनेस्ट एग्जांपल है। ये इंसुलेटर, ओके, कितना होता है बेटा? अप्रॉक्सीमेटली 6। कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 6। 5.5, 5.8 कुछ बुक 6 लिखती है, ठीक है। तो डायमंड इज द फाइनेस्ट। भाई गर्मी भी बहुत है ना। तो नाउ वी आर कमिंग टू दी आवर टॉपिक, दैट इज ये वाला सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? क्या होता है सेमीकंडक्टर में दोस्तों? सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज्यादा, तो विच हैज द कंडक्टिविटी मोर देन द insulator but less than the conductor. So in between the conductor and insulator. Okay. So the band gap. So I will make a diagram of this in terms. So this is the band gap diagram. Band gap diagram. This is VB. This is CB. This is the free electrons. This is the valence band electrons. This is not a free electrons. Okay. These are the valence band electrons because these electrons are involved in ये इलेक्ट्रॉन किसका, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, ये किस काम आते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच बिलोंग्स टू द वैलेंस बैंड, दे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स? क्या किस काम आते हैं वो? द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन. दे आर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर एनर्जी इज लेस. प्लीज राइट दिस. नोट नंबर 1, राइट विद द रेड पेन. नई कॉपी लगा लो बेटा, कल से, आज से तो कल से लगा लो. राइट विद द रेड पेन. नोट नंबर 1, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. बाउंड आप क्या हो? जो क्लास में बच्चे बैठे हैं, द स्टूडेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू द क्लास, दे आर बाउंड और फ्री? बाउंड टुवर्ड्स व्हिच? न्यूक्लियस. हु इज द न्यूक्लियस? टीचर. ओके. And the students which are roaming in the corridor, he just assumed as a free electrons. They have a higher energy. They have a higher energy. Okay. तो बच्चा बाहर कर रहा है तो वो का लड़ाई झगड़े करेगा, इधर से चल मेरे साथ चल, है ना, चल मेरे साथ चल, कुछ ना कुछ करता रहेगा. Okay. The electrons of the valence band are called bound electrons. Number 2, they involved in covalent bond formation. They involved in covalent bond formation. They involved in covalent bond formation. Number 3, they are tightly held to positive ion core. They are tightly held to positive ion core. ब्रैकेट में लिखिए न्यूक्लियस. पॉजिटिव आयन कोर का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस से बंधे रहते हैं. ओके. हमारी क्लास का जो न्यूक्लियस है वो गॉड है, ठीक है. वी आर सपोज्ड टू टैग विद द गॉड. ओके. सो दे आर टाइटली held to the positive ion core nucleus. Okay. Number 4, so they have a less energy. So they have a lesser energy as compared to free electrons. So they have less energy as compared to the free electrons. Note number 2. The electrons in the conduction band. The electrons in the conduction band are loosely bound.
are loosely bound to the positive ion core. जो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से या पॉजिटिव आयन कोर से लूजली बाउंड है and will take part in conduction and will take part in to positive ion core. ब्रैकेट में लिखिए न्यूक्लियस. The electrons in the conduction band are loosely bound to positive ion core nucleus. So the conduction band electrons. So the conduction band electrons take part in. So the conduction band electrons take part in conduction. Okay, and out. So this band gap energy Eg. See, we have two kind of semiconductor materials, most popularly silicon and germanium. Silicon and germanium. For the silicon, this band gap energy is कितनी थी मैंने आपको बताया था 1.12 electron volt for silicon. And for germanium, that is 0.72 electron volt for germanium. At T is equal to 0. For T is equal to 0. So this is a viva question. This is the viva question. What is the band gap energy for the silicon? What's the answer? 1.12. 1.12 electron volt for silicon, and for germanium it is a 0.72 electron volt at absolute zero. At T is equal to 0. Okay. Now the question is, the most widely used material is silicon instead of germanium. You might have heard the word Silicon Valley. Why it is not called the Germanium Valley? Because silicon is widely used as a semiconductor material. And why silicon is widely used? So please write the question. Why silicon is widely used semiconductor material instead of germanium? Instead of germanium. Why silicon is widely used? Why silicon is widely used semiconductor material as compared to germanium? As compared to germanium. तो इसका आंसर क्या होगा? What is the answer? आप देखिए, ये देखिए, ये जो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, this 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, this is very less energy. This is very less energy at room temperature. At room temperature, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन at room temperature, इलेक्ट्रॉन gain this energy. ठीक है, room temperature and shift from valence band to the conduction band automatically. Automatically. Is it required? No. Is it required? No. तो देखिए, ये एक वैसी बात है कि you have not switch on the switch and appliance automatically works. So that is not required. That is not ये एक वैसी बात है बेटा हिंदी वालों के लिए कि जैसे आपने पंखे का स्विच ऑन नहीं किया और पंखा चलने लगा. ये हमें चाहिए? हो जाएगी. हमें सिर्फ कनेक्टिविटी तब चाहिए जब हमें उसकी जरूरत है. I getting your point? See, this 0.72 electron volt energy is very small, and even at the room temperature, electron shift from VV to the valence band to the conduction band for germanium automatically by gaining thermal energy. So that is not required. Okay. But in case of silicon, 1.12 is a significant number. 1.12 electron volt is a significant number. So electron cannot gain this amount of energy automatically, or electron cannot gain this amount of energy from thermal energy. So that is why the electron will not jump from valence band to the conduction band automatically. So that is why silicon is used. That is why silicon is so this side. For germanium, 0.72 electron volt. For germanium, 0.72 electron volt energy is a small amount of energy that electrons gain. That electron gains
from thermal energy even at room temperature. Electron gain even at room temperature and will take part in conduction. And will take part in conduction, which is not required. 0.72 electron volt is a small amount of energy that electrons gain from even at room temperature, which is not required. Okay. Number 2, in case of silicon, 1.12 electron volt is a significant amount of energy, is a significant number. समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? Joseph, are you getting this? Benedict? Okay. 1.12 electron volt is a significant amount of energy. So even at room temperature, electron will not shift from. So even at room temperature, electron will not jump from valence band to the conduction band, VB to the conduction band. Okay, VB to the conduction band by the means of thermal energy. By the means of thermal energy, electron 1.12 electron volt is a significant amount of energy that the electrons will not gain from the room temperature, even at the room temperature, and electron will not jump from valence band to the conduction band. Next point. So this is the reason. Silicon is widely used. Silicon is widely used material, semiconductor material instead of germanium. Instead of germanium. So समझ आया? Are you getting this? Why Silicon Valley is called? In India, what is Silicon Valley? Bangalore. And in USA, California. Okay. So mostly widely semiconductor material is silicon. Why? Because that band gap energies are large. That is a significant number. And electron will not automatically jump from dB to the CB and will take part in a conduction. Okay. Now we start with the Fermi level. Now see, semiconductor materials are of two types. One is called a pure, another is called a impure. What is called a pure? Another is called a pure is called intrinsic. Pure is called a intrinsic. The second is called impure semiconductor. And impure is called a extrinsic semiconductor. So first of all, I would like to discuss the pure or intrinsic semiconductor. I will discuss the Fermi level in the pure semiconductor. Now see, this is the VB, this is the CB, okay. This is called EC. This is called the upper edge of the valence band. This is called the lower edge of the conduction band. And this is called Fermi level. And this is for the pure semiconductor. For the pure semiconductor, Fermi level lies in middle between the valence band and conduction. तो जो Fermi level होता है वो pure semiconductor का क्या होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के सेंटर में लाइन करता है. सो वी कैन से दैट EF is equal to EC plus EB by 2. Okay, at the center. At T is equal to 0. Please make this diagram. At absolute 0. Okay. तो वैलेंस बैंड क्या होता है अच्छा दोस्तों? फील्ड. ये क्या होता है? फील्ड. और ये क्या होता है? एम्प्टी. एट एब्सोल्यूट 0
at absolute zero, I mean to say T is equal to 0 Kelvin, this valence band is filled. Actually sweating बहुत ज़्यादा हो रही है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है? So absolute zero, this valence band is completely filled and conduction band is completely empty. So the Fermi level lies in middle between the top, in the upper edge of the conduction band. Sorry, this is EV, valence band. Upper edge of the valence band and lower edge of the conduction band. So the formula is EF is equal to EC plus EV divided by 2, and the condition is T is equal to. This is for pure or intrinsic. This is for pure or intrinsic semiconductor. ठीक है, कोई आपसे पूछे कि प्योर सेमीकंडक्टर पे फर्मी लेवल कहाँ पे होता है तो आप क्या बताओगे? मिडिल. कहाँ पे होता है? एंड फर्मी लेवल इज हाइपोथेटिकल लेवल. फर्मी लेवल इज हाइपोथेटिकल लेवल at T is equal to 0 Kelvin, below which all the states are filled and above which all the states are empty. तो बेसिक डेफिनेशन ही चेंज होगी. Are you getting the point? Basic definition will never change. So what is the definition of Fermi level? It is the topmost. What is the definition of Fermi level? It is the topmost filled energy level at T is equal to. Define कीजिए एक बार सारे, एक बार जोर से. It is the. एक बार में. It is the filled energy level at T is equal to 0 Kelvin and so this is the definition of Fermi level. And the energy corresponding to that level is called Fermi energy. Number 2, the levels below the Fermi levels are filled, or I would say the energy states below the Fermi level are filled, while the energy states above the Fermi level are empty. So these are the two basic definitions of Fermi level and Fermi energy. Fermi level and Fermi energy. Now I would move to the extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. So for extrinsic semiconductor, what will happen? तो क्या होगा उसमें? Extrinsic में क्या होगा? अच्छा, extrinsic बनता कैसे है? Impurity ऐड करके है ना? What is impurity? What is doping? What is it? Doping. Doping means to add impurity. To add impurity. पर करते हैं क्यों? Why we do the doping? To increase the conductivity of a pure semiconductor. Pure semiconductor की क्या होता है? Conductivity कम होती है और pure semiconductor में एक दूसरा होता है number of electrons is equal to number of holes. Number of electrons is equal to number of holes. Now we want to increase the conductivity. So what we do? Doping. The doping means to add impurity. So doping is just like milk. We have a milk, pure milk, and we add a water. So pure milk plus water. Arrow क्या बन जाएगा? Impure milk. क्या बन जाएगा? Pure milk plus water. What's the formula of water? Water. Arrow क्या बन जाएगा? Impure. क्या बन जाएगा? Impure milk. So similarly, in our case, pure semiconductor plus impurity, arrow पे क्या लिखेंगे? This process पर doping, this is called doping. तो ऊपर वाला भी क्या हो गया फिर? Doping ही हो गया. Doping means to make impure from pure. To make impure from or to convert pure into impure. Okay, तो क्या बन गया? Impure semiconductor. तो नोट में लिख सकते हैं. नोट नंबर 2 में डोपिंग मीन्स, डोपिंग का मतलब क्या है? प्योर इनटू impure and the process is called doping. Process is called doping. तो हम डोपिंग करते हैं, तो कौन सी डोपिंग करते हैं? दो तरह की डोपिंग करते हैं. एक होती है एन टाइप, एक क्या होती है? ठीक है. अगर हम फास्फोरस डालते हैं तो वो उसको बोलते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, है ना? और अगर बोरोन डालते हैं तो बोलते हैं ट्राइवैलेंट. तो पेंटावैलेंट से बनता है एन टाइप और बोरोन
ट्राइवेलेंट से बनता है पी टाइप बनता है, ठीक है। तो कल हम देखेंगे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इन एन टाइप एंड बी टाइप। So kindly be with the intake with the class. This is the YouTube channel TG and DJ Physics. So kindly subscribe it. So thank you so much. Class के साथ, ठीक है? Okay, thank you. So thank you for the listening. आपको गर्मी थी, thank you.